Mesco for about 10 years. Mesco is helping me like in child's life for every part of their life. Their parents are with them. Like that, Mesco is there with me from my primary education and I am very helpful. Mesco has not only helped me academically, I was a very introvert person, so I don't know how to speak, when to speak, what to speak and everything, and how to interact with other people. But due to personality development camp, due to felicitation functions and everything, right now I feel confident not only academically but there is overall development. So I thank Mesco a lot. From my part, thank you so much. Thank you sir. मैंने मेस्को सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग थी तब ज्वाइन किया था. मेरे भाई ने बोला था कि है ऐसा कि वो प्रोवाइड करते हैं. मेरा फाइनेंशियल कंडीशन इतना अच्छा नहीं था. लाइक मेरे पापा रिक्शा ड्राइवर है और मेरा एल्डर ब्रदर भी इंजीनियरिंग कर रहा था, तो दोनों का पॉसिबल नहीं था. सो मैंने इधर से अप्लाई किया एंड मेस्को ने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया था. थैंक यू फॉर सच अ सपोर्ट. I'm just thank you sir. I'm Rehan and one of the ex-student of Mesco. मेरे साथ आज और भी लोग हैं इधर. लाइक हम लोग ex-student, हम लोग तकरीबन कुछ 10-15 लोग हैं इधर. Some of are the members, committee members today, including me also. And कुछ लोग तो like Wasim is there who came from USA, Tabish is there who came from London, so it's a mixture. हमें भी हमारे पुराने दिन याद आ गए इधर बैठ के. Like some years back we too had stood here being felicitated. So on behalf of all ex-students or alumni, I would like to congratulate the students who got felicitated today and excelled in their academics. This is just the beginning of your journey and you have to remember who you are. हमारी लाइफ में like social and economical challenges तो भरे ही थे. Finally अल्लाह सुभान अल्लाह ताला अलमाइटी ने मेस्को जैसा गिफ्ट हमको दिया, who took our hand and we completed our education and what we are today. So on behalf of everyone to complete Mesco, I would like to thank you. एक शायरी मैंने आज सुबह ही बनाया स्टूडेंट्स के लिए. मैं वो आप लोग के साथ शेयर करना चाहूंगा. रुकना नहीं है तुझे, इम्तिहान आगे भी है इस सफर में. रुकना नहीं है तुझे, इम्तिहान आगे भी है इस सफर में. रखना हौसला तू हमेशा, गिरना आगे भी है इस सफर में. ना समझ खुद को तू तन्हा, ना समझ खुद को तू तन्हा, कारवां आगे भी है इस सफर में. कर कोशिशें तू हमेशा, कर कोशिशें तू हमेशा, कामयाबी आगे भी है इस सफर में. Yes, with all of you, I would like to express my gratitude. The gratitude that I have got the opportunity to be associated with Mesco. Coming on the stage and receiving an award is definitely an achievement, but coming on the stage to represent a group of people is a totally different thing altogether. And I have got this opportunity just because I was a part of Mesco. So thank you one and all. Now talking about the experience at the personality development camp, everything from accommodation to food, from the amazing resource persons that came to instruct us, to the supportive members, staff members, and from discipline to all the fun activities, it was a complete package. It was phenomenal. So therefore, I'm now especially addressing to each and every student sitting here. If you are getting this opportunity to be a part of Mesco Personality Development Camp, then grab it, utilize it, channelize it and improve yourselves.
because we were taught the skills which are so essential for a student in today's time to remain and survive in the industry. Therefore, I request all of you to please, if you get the opportunity, please be a part of it. Thank you so much. मैं सब बच्चों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आज जिन्होंने मेडल्स और सर्टिफिकेट जिन्होंने मिले। ये वो बुलंदी इख्तियार करता है कि हमारे समाज में इतने बच्चे एक संस्था से निकल के अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। I would love each and every one to cheer all these kids who have received their certificates today. Please, all together, give them a big applause. Thank you very much. एक जिंदगी, एक कारवां आपका शुरू होने वाला है। आपको उस मंजिल पर पहुंचना है जहां सब आपको याद रखेंगे और आपको अपने कौम और अपने वतन की जीनत बनना है। हर एक आदमी के पीछे किसी न किसी का हाथ जरूर रहता है। हर आदमी के पीछे, मैं कहूंगा, उसके पीछे उसके दो हाथ रहते हैं। एक तो उसकी माँ है जो उसको बचपन से बनाती है, और बाद में आपकी बीवी है जो आपका तहे दिल से साथ देती है और आपको हर काम में, आपकी हर खुशी में वो अपनी खुशी समझती है। एक इंसान को इस जगह पे पहुंचना और लोगों की मदद करना, ये एक बहुत ही बड़ी बात होती है कि उसकी बीवी उसमें शान के साथ में शामिल होती है और उस काम को आगे बढ़ाने के लिए वो हर काम की कोशिश करती है कि जो लोगों का फायदा हो और हमारी उम्मत आगे बढ़े। और वो है मेरी बीवी, जिसका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। आप सब लोगों से यही इल्तिजा है कि आप भी हर कामयाब इंसान को कॉपी करें और अपनी जिंदगी संवारने की कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह। Good evening, friends, dignitaries on the dais. I was just told a few minutes ago that I have to come here and speak, and I have not prepared any speech, but I'll speak from my heart. I'll just tell you a story first about my life, my history, a small story, and then give you the importance of education and give you some pieces of advice to certain people of different segments. My father came to this city when he was 15 years old. He came here to the city because there was no one to feed him. He has lost his parents. He was orphaned. He worked with his two brothers in his uncle's factory, pushing a handcart and getting a salary of 2.5 rupees per month. 3 brothers worked for 3 years and saved 100 rupees to buy a guillotine shear to cut tin plates. That's how my family company Zenith Tins was born. He worked very hard for 47 years, and when he left us, Zenith was the largest exporter of tin containers from this country. When he left us, he left a school in his hometown in Vadodara where he wanted every
student, every child to have school education, because he did not go to school. Today 6,000 students study in that school. When time came to give admission to me in a school in Mahim, he didn't know how to get admission because he could not speak English. So he asked his English-speaking neighbor to admit me to one of the best schools in the country today, Bombay Scottish. So education changes lives. Education makes people live a better life. So what Mesco has been doing for the last 52 years, I congratulate them and salute them for the amazing activity they have done of putting 43,000 people under their umbrella and helping them and supporting not only the education but the health and the food around it. So amazing activity, congratulations, thank you very much Mesco, thank you. A message for the people who got felicitated today. Brothers and sisters, remember that hard work has brought you here. There are some people around you who also need help. My request and suggestion, talk to one person around you who has not got the marks as you have got. Spend some time with that person. Guide them, advise them, and make sure tomorrow they come on the stage to receive the award. There is another segment here who are sitting in the audience, who are the patrons. With every name they said sponsored by. I thank them and applaud them for all the support and look forward to their continued support to this movement. And a message for Rehan and his friends. Once a Mescoite, always a Mescoite. Don't call yourself Mesco. For life, you are a Mescoite. And if any of you want to reach out to me, I'm available on all social media handles. Any advice, any help, I'm available. And wish you all the best. And thank you once again for giving me this honor. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आज यहाँ पर इतने खूबसूरत स्टेज के ऊपर बैठे हुए आपने आप में एक अंजुमन है। मेस्को का जो नाम है 7 समंदर पार गया है। मुंबई से आए हुए, महाराष्ट्र से आए हुए कोने कोने के हमारे माँ बहने, उनके बच्चे, और जिन्होंने मेस्को के माध्यम से अपने गरीबी हालात के समय में मेस्को के संस्था में आकर मदद लेकर आपने जो पढ़ाई पूरी की, पढ़ाई पूरी करने के बाद जिन बच्चों ने अच्छे मार्क्स लाए उनको मैं तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूं। वक्त बहुत हो चुका है। हमारे बीच हमारे बड़े भाई कौम के रहबर सरपरस्त जिन्होंने मुझे मेस्को के साथ जोड़ा है, संगीतकार संगीत सम्राट नौशाद अली साहब, उनके बड़े साहबजादे डॉक्टर रहमान साहब हमारे बीच में मौजूद है। दूसरे हमारे छोटे भाई उद्योगपति मिस्टर असलम शाह साहब, वो भी हमारे बीच में मौजूद है। और यूएसए से, साउथ अफ्रीका से और जो भी बाहर के कंट्रीज से इस मेस्को से जुड़े हुए सारे हमारे कौम के रहबर अब्बास अली कुरैशी साहब, हमारे हाफिज बेग साहब। मैं तो गए 30 साल पहला मुंबई शहर में आया था। उस टाइम मेरी उम्र 12 से 15 साल थी, 13 साल थी लगभग।
मुंबई में आने के बाद थोड़ा सा समय लूंगा, आप थोड़ा सा 2 मिनट मुझे बर्दाश्त कीजिए। मुंबई शहर में जब आया था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी रहना किधर है, कोई ठिकाना नहीं था। फुटपाथ पे सोया हूं मैं। ये मेरा कहने का मतलब, मैं अपने आप में हिस्ट्री में आपको बयान नहीं करना चाहता हूं, ये आपको बोर भी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हर एक परिवार के माध्यम से किधर ना किधर ये परिस्थिति निर्माण हुई है। तो हमारा इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मेस्को के माध्यम से, जिन्होंने मुमरा जैसे इलाके में बहुत अच्छी खूबसूरत स्कूल बनाई है इनके जॉइंट वेंचर में, और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं मेस्को को कि उन्होंने और एक महाराष्ट्र शासन से एक प्लॉट रिजर्व करके लिया है। उसका भी काम बहुत अच्छे से शुरू हुआ है। मुझे और इतना अच्छा लगा कि वहां की स्कूल देखकर, स्कूल के बच्चों को मैं मिला, स्कूल के डायरेक्टर लोग को मिला, प्रिंसिपल से मिला, सबसे मिला। लोग कहते हैं कि मुस्लिम लोग बदनाम होते हैं, लेकिन नहीं, वहां की जो स्कूल देखकर मेरा दिल बाग बाग हुआ। इतना अच्छा बच्चों में डिसिप्लिन, इतने अच्छे टीचर्स, और हमारे देश के छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को एक राह दिखाने वाले स्कूल मुमरा में मैंने देखा है, और वो मेस्को के माध्यम से देखने का मौका मुझे मिला है। मैं माफी चाहता हूं आप लोगों की, थोड़ा सा स्टेज से उठकर मैं बाहर इसके लिए गया था। महाराष्ट्र शासन के चीफ सेक्रेटरी अजय मेहता साहब का फोन मुझे आया था। उन्होंने माफी मांगा है, बोला है कि चौगुले साहब, मुझे उद्धव साहब ने बुलाया है, इसके लिए मैं प्रोग्राम में नहीं आना चाहता हूं, लेकिन महाराष्ट्र शासन के माध्यम से जो भी कुछ आपके संस्था को मदद चाहे हम करने तैयार है। दूसरी जिम्मेदारी अब्बास अली साहब ने मेरे ऊपर डाला है कि वो संस्था की जो इमारत इन्होंने बना है उनका ओसी का काम मेरे जिम्मे पर डाला है। मैं आपको वादा करता हूं इंशाअल्लाह वो काम मैं करके दूंगा। मेस्को के माध्यम से जितने अलग अलग कॉलेज में पढ़ने वाले हमारे स्टूडेंट, उनको देखकर मेरा दिल बाग बाग इसके लिए हुआ कि इनको अभी आज मुबारकबाद यहाँ पर मिली है। और मैं और एक आप लोगों को थोड़ा सा सजेशन इसके लिए देना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के कोने कोने में जितने कलेक्टर के माध्यम से अगर इस विस्तार को हम लोग बढ़ाएंगे तो महाराष्ट्र शासन से जो भी कुछ आपको अगर संस्था को मदद लगेगी, मेरा खून का आखिरी कतरा आपके साथ है। तन मन धन से आपके साथ में खड़ा हूं। मैं एक छोटा सा इंसान हूं, कोई बहुत बड़ी बात करके आप लोगों में गुमराह नहीं करना चाहता हूं, लेकिन प्रैक्टिकल काम करना मैं जानता हूं। प्रैक्टिकल काम करना, हमारे समाज को कैसा करा के लेना है, गवर्नमेंट के माध्यम से हो, म्यूनिसिपैलिटी के माध्यम से हो या पुलिस के माध्यम से हो। आज 27 साल से मैं राजनीति में PhD किया हूं, लेकिन राजनीति का भाषण आप लोगों के सामने इसलिए नहीं करना चाहता कि आप लोग खामा का बोर हो जाओगे। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जो आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, इज्जत दी, आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और हमारे देश के नन्हे मुन्ने बच्चों को, हर पड़ोसी ने ध्यान देना चाहिए कि बाजू का बच्चा कोई नशा तो नहीं कर रहा है। देश को आजादी मिलकर 75 साल हुआ है, लेकिन साजिशन तौर पर खास करके माइनॉरिटी अल्पसंख्यक के बच्चों को नशे के ओर लेके जाने का कोशिश चल रही है, साजिशन तौर पर। उससे हर पड़ोसी का, आजू बाजू का बच्चा सही रास्ते पे जा रहा नहीं जा रहा है, हमारी सबकी जिम्मेदारी है। एक भी बच्चा अगर गलत राह पे जाएगा तो आजू बाजू का पूरा माहौल खराब हो जाता है, उस घर की परिस्थिति बहुत डाउन हो जाती है। हर माँ बाप का फर्ज है, समाज का फर्ज है। समाज के साथ साथ इतनी अच्छी मेस्को की संस्था आपके साथ खड़ी है, मैं चाहता हूं मेस्को के लिए जोरदार ताली बजाया जाए। मैं राजनीति में काम जरूर करता हूं। मेरे खालू जो है कैबिनेट 10 साल मिनिस्टर थे कांग्रेस से। राजनीति में हूं, लेकिन इलेक्शन लड़ने का इंटरेस्ट इसलिए रखता हूं कि इलेक्शन में लड़ने वाले लोग जो है वो काम नहीं करते हैं, काम करते हैं सच्चे सोशल वर्कर काम करते हैं। मैं समाज का काम करना चाहता हूं। आज 800-900 लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं चाहता हूं कि मेस्को का नाम जो है 800-900 लोग, 4-4 लोगों को भी आगे अगर बढ़ा है
तो 9,000 लोगों में हमारी बात चले जाएगी, 90,000 लोगों में चले जाएगी, 9 लाख लोगों में चले जाएगी। और पता नहीं कौन सा बच्चा किधर से, कोई परिस्थिति उनकी नाजुक हो, मेस्को का एड्रेस किसी को मिल जाए, आके अगर अच्छे से पढ़ाई करे तो हम लोगों को भी दुआ लग जाएगी। और फिर एक बार मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपने जो भी आगे चल के जवाबदारी मेरे ऊपर डालोगे, महाराष्ट्र शासन की हो और भी कोई जवाबदारी है, उसको मैं सम्मान दिलाने की जरूर कोशिश करूंगा। और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मेस्को संस्था का, सारे हमारे सरपंच लोगों का, साथ संबंध से आए हुए जितने भी हमारे मेस्को संस्था के जितने डायरेक्टर है, शुक्रिया अदा करना चाहो। मेरे लायक जिस लायक खिदमत है आप बताइए, बंदा हाजिर है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, नमस्ते। Honorable Dr. Azhar Ali Qureshi, the President of Mesco, then Sri Abbas Ali sir, other dignitaries on the stage, and the top ranking students, others also, and parents. I am first time here associating with Mesco, or I am first time in this stage. First of all, I informing you that I was called and invited. I asked her what is my role there. Then one madam was there, she told that you have to inspire our top ranking students. So giving advice is very easy, but on the other side it will be very boring. I know it. But as I came here, I had to say something before you. First of all, I want to borrow the words of our most popular President of India. He is no more, Dr. APJ Abdul Kalam. Dream is not the thing that you see in sleep. Dream is not the thing that you see in sleep, but it is a thing which does not let you sleep. Dream is a thing which does not let you sleep. In Kerala, I am from Kerala. In Kerala, state government conducts yearly youth festival for the students up to class 12. And this year, nearly 13,000 students participate in that youth festival. That it is systematically done, school-wise, then taluk-wise, then it will go to district-wise. After that, it comes to the state-wise competition. 13,000 children participate in different types of competitions. Kathakali will be there, Mohiniyattam, Bharatanatyam, songs, classical songs, everything will be there. So all film directors, media persons, all come there and ask the children, take the interview of the children, because all are gems from each district they are coming. So all of them have dreams. Then the media persons ask, what is your dream? So the 13,000 students render their or inform through the channel that they are having dreams, these are their dreams, that. But after 15 years or 13 years, if we make a survey of that 13,000 or 15,000 students, only 2 or 3 achieve their dreams. So we have to think on that. Here one madam told that some top rankers are there, some losers are there. But I don't believe in that losers. They are not losers. In my entire life, I didn't receive a felicitation or a prize in my academic. But today I am able to give the felicitation or felicitate children. I was below 50 or 50. But there are no losers. Each and every child is having his own talent. But what they have to do is believe on themselves.
they can achieve. There is nothing. One person was saying, I don't know his name. Asman hamare muthi mein hai. How meaningful is that one? Here, I think more than 70% are youngsters. So I am more energetic. I am getting more energy when I am traveling in bus, train, when youngsters are with me. Because they are full of energy, tons of energy. They can do anything. Now I am nearing to 50. What I can do? I cannot start any business, or that is not the age. But the children, those who are sitting, the 70% or those who are sitting, all are having their own talents. No one is topper or no one is loser. Everyone, but topper is there, means they have come forward. When we try to catch the train, somebody gets the seats. We are losers. We won't get the seats. Somebody comes forward, but all can win and all can achieve. They should have a dream, like our former president told. All should have a dream and they should believe on themselves. And one thing is there, they should have the confidence and hard working. Then only they can reach the dream, and everyone should come forward. I am much worried. One thing is there, I was seeing former students and all this. Only one person was trying for the IAS from here. So many persons got the last year or former students, they are all working in private sector. None of them are trying for the government sector. It's not here only. I was earlier in Hyderabad, then Chennai, then I came to Mumbai. 2012 I was transferred to Mumbai. In metros nowadays the situation is there. Children are not interested in government sector. One thing I want to tell that when I came to Mumbai, I was much worried that I would go to some other station, especially south, Kerala, Tamil Nadu or Bangalore. But a person when transferred to Mumbai, it is difficult to go from Mumbai back to south or some other station. Because here the vacancy is more in government sector, but candidates are less from Maharashtra. That is a fact. Because more than 30% of the revenue to the government of India is getting from Maharashtra itself. Income tax I am telling. But more than 70% of the employees are from outside from Maharashtra. That is a fact. So the youngsters, I want to tell you that you should try for the government sector jobs. Why you are not getting to that one and avoiding that one? Persons from other states are coming here and they are not able to get transferred to their stations because the vacancy is there, hectic work is there. So the officers or the officials won't transfer them. So I request youngsters, you try for the government sector also, government job also. You make a dream. It's not impossible. Believe on yourselves. You can do it. You can achieve the government job. Try for that one. Put your dedication, your confidence and hard work will bring you, or you will achieve the dream. And here I want to say something about Mesco. Last year, I think, in our colony, I am the president of our Central Government Employees Residence Welfare Association of Ekta Vihar. There are more than 1,000 quarters are there, all for Central Government officers and staff. Then when Mesco, somewhat they got the one Bharat was there. He got my number and he contacted me. So invited, but he told me that we are collecting old newspapers and old items for this charity. Till then I was not aware of the Mesco. So I told you come Monday to Saturday, because Monday to Friday we are busy. So Saturday you come, we will have a discussion. And he came, we discussed. 2 Saturdays discussed, but we were not convinced about. Then I searched through the net. Then I saw this is a big organization
a huge organization. What I did a mistake. I immediately called him back. I told him, whatever program you are going to do, we will give you full support, because I checked all the activities of Mesco. And Mesco is a big organization, elder than me. That's the fact. And I can't tell anything about Mesco because big jobs they are doing. Here told more than 43,000 children. Now they are grown up. They have got benefited from this. This year, the report was telling that more than 5 crores have been spent. And likewise, I also started and a big campaign was conducted there, collecting the newspapers. After that, it was regularly on the first or second Tuesday, they visited my residence. Still, it is going on. And again, I request the organizers to please make one more campaign at our colony. And I will request all of our residents to cooperate much more than earlier. Thank you very much. The distinguished guests on the dais, students and parents who have assembled here on this auspicious evening. Mesco has covered 52 years almost this September 2020, and my congratulations to all the students who have achieved distinguished examinations that you have passed through. My message to all the students is that we founder members of the 7, 3 of us are surviving. And to continue this good work of Mesco, you will also need to come forward and join Mesco someday. And that is the only way Mesco will survive. And this is our sincere effort and sincere our expectation that this, even when we are gone from this world, Mesco should continue, and it is your responsibility to go ahead. I thank all the distinguished guests who have come from distant places to make this auspicious evening successful, and the management of the YB Chavan Hall who have cooperated with us in every way. Thank you very much. Thank you.